So once again, a very sweet good morning to all my dear friends and dear students and dear parents. As you know that these are your live classes from Suraj School Balana, and you people are attending these English language classes. In these classes you are learning how to have a nice conversation, how to have a nice communication skill in ourselves, and how to acquire any second language or third language. It is very simple because we have to follow some steps to acquire any third language, second language, fourth language, whatever we have. We have to follow the same step which we followed to have our first language. हमें वही फॉलो करना है जो हमने हिंदी सीखने के लिए फॉलो किया था. So need not put any more effort, just we have to be in our comfort zone and we have to do some of the tasks which we keep doing also. Okay, we try to do except that more, but we have to do here to try to learn that second language. Okay, जैसा कि आप इससे पहले भी कुछ क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, you have seen some of the videos, and if you have not seen, please go back to the channel and you keep some all the videos have been uploaded and you just keep checking and keep learning from there also. अगर आपने नहीं भी किए हैं तो आप देख सकते हैं previous videos में, क्योंकि सभी अपलोड किए जा चुके हैं. Okay, and without this you cannot learn directly from this video, from this class, because all these classes are back to back connected with each other. So directly we cannot learn from the 6th class, 7th class, 8th class. जो 6th 7th वीडियो अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो नहीं सीख पाओगे, इसीलिए स्टार्टिंग से देखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शुरुआत से देखना बहुत ही जरूरी है in the case of language. Okay, why? Because we started with zero level. You may say that we took first step in very first video. Okay, after that we have discussed many more things in next to next videos. Back to back, every video is connected with each other. So keep learning and keep connected, be connected with these classes and keep learning more and more. Keep practicing also at home and speak more and more. Try to speak just only. If you are not able to speak with fluency, with that flow, just try to speak. कोशिश करना है. That try can make you perfect also. Okay, and as we know that often it is written behind the notebooks also that practice makes a man perfect. Okay, so from that point of view, just if you try, then you can also be fluent like as English people. Okay, so need not do any other thing, just do not have to just cram the sentences. Ratification नहीं करना है. Just we have to do the things which are taught in this class. We have to use in our behavioral use in our routine. Okay, if you talk about junior, we have learned about future action. Future action कैसे show करते हैं. Again I am repeating ones who have not seen previous videos. जिन्होंने नहीं देखा है इससे पहले कोई वीडियो, उनके लिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. In future action we will get in first language. Once again I am writing in note, फिर से बता रहा हूँ. We have to take help of our first language, you will say हिंदी. हिंदी की हम हेल्प लेंगे पहले, उसके बाद हम सेकेंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को सीखेंगे. ओके, व्हाट डू वी हैव टू डू वो आपको बता रहा हूँ. कैसे सीखेंगे? वेरी सिंपल. वी हैव टू डू सम ऑफ द टास्क लाइक वी हैव टू लिसन द थिंग्स एंड देन वी हैव टू ट्राई टू स्पीक. पहले सुनना है विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड देन वी हैव टू ट्राई टू स्पीक व्हाट इज टोल्ड इन द वीडियो. Okay, because every video is related to our daily routine. Okay, and the examples which we do this common, I try to get you the same examples which we keep repeating every day. Okay, so from that point of view, just you have to be connected with these classes. And as I told you, the first concept in first class we learned about how to show future action. Future action के लिए first language में हमारे पास थी like ga, ge and gi. ओके, तो इसके लिए हमने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश में क्या यूज करेंगे बेटा? वी विल यूज विल एंड शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, किसके लिए? व्हेन वी गेट गा गी इन फर्स्ट लैंग्वेज इन हिंदी, तो हम विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ओके, दैट वाज अबाउट फर्स्ट कांसेप्ट. लाइक इफ यू टॉक अबाउट एन एग्जांपल कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, एंड देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल. जस्ट यू कैन यूज विल विद everything, every subject. I will go, he will go, she will go, we will go. Okay, because according to the advanced grammar there is no difference between will and shall, so you can use will at every place. Understood? And like more examples कि हम सोएंगे, we will sleep. Okay, तुम खाना खाओगे, you will eat food. Okay, मम्मा कपड़े धोएंगे, mama will wash
plus. Okay, हाँ हम खेलेंगे, we will play. Like this we can use will plus verb first form to show everything. So that was our first concept. After that we discussed about order request. किसी को order करना हो, request करना हो, there are many ways to show these things, but we have one special. After that we discussed about existence and presence. These are shown by using is and are. Like ये मेरा school है, this is my school. Okay, is and are we use to show existence, presence. Okay, more example after that. Next concept you discussed about how to show order request. उसके लिए क्या था हमारे पास? फर्स्ट लैंग्वेज में हमने सीखा था कि ऑर्डर कैसे देते हैं कि तुम जाओ, अंडरस्टूड, ओके, वहां मत बैठो, अंडरस्टूड, खाना खा लो. सो लाइक दैट if we go for request is done with politeness. request हम करते हैं politeness के साथ. so for that we have to use please. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? please यूज कर लेंगे कि please खाना खा लीजिए, अंडरस्टूड, प्लीज आप यहाँ बैठिए. so this is the difference. if we have to request someone, किसी को रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज के साथ करेंगे. ओके, ऑर्डर करना है दैट इज डन विद स्ट्रिक्टनेस, अंडरस्टूड. आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश में कैसे शो करेंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट? तो वी शो इन सेकंड लैंग्वेज बाय यूजिंग डू और डू नॉट डू. इफ रिक्वेस्ट की बात करें, अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें तो बोलते हैं कि प्लीज सिट हियर. ऑर्डर देना हो सिट हियर, अंडरस्टूड, जाओ गो. और रिक्वेस्ट करना हो प्लीज यू गो, अंडरस्टूड. रिफ्यूज करना हो, किसी को मना करना हो, सो यू डू नॉट गो. विद रिक्वेस्ट please you do not go, understood. so that was about that class. After that if you talk about the next class we discussed about continuity, frequency and progressive tense. उसके बाद हमने continuity की बात की थी. in previous videos you might have seen continuity is, you may say the present continuous tense. we were discussing about the present continuity. continuity क्या होती है? कोई काम कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है, अंडरस्टूड. तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था? we used is and are plus verb first plus ing, understood. simple. we used is and are plus verb first plus ing किसके लिए? to show the continuity of present, understood. फर्स्ट लैंग्वेज की क्या थी हमारी? हिंदी में हमें क्या मिलेगा? we got here, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, अंडरस्टूड. तो हमने क्या यूज किया था? is and are plus verb first ing. अब इसके बारे में बताया था आपको कि is कहां यूज करेंगे, ओके, एम कहां यूज करेंगे और आर कहां यूज करेंगे, अंडरस्टूड. अब ये भी बताया था आपको इज वी यूज विद ही शी एंड सिंगुलर थिंग, ओके, लाइक वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, अंडरस्टूड. मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग. वो खेल रहे हैं, मोर देन वन प्लूरल थिंग्स, फॉर दैट वी हैव टू यूज आर. दे आर प्लेइंग, अंडरस्टूड. मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग. वो जा रहा है, ही इज गोइंग. हम जा रहे हैं, we are going, understood. so like that we have to use is and are plus verb first plus ing to show the continuity of present, understood. up to previous class we have learned about that. question कैसे बनाएंगे इसमें? we must know the questioning also. if we have to have the more conversation we must know about the questioning also, क्योंकि अगर हम दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे only in that case he will be continue with his communication skill, ओके. अगर हम किसी से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं किसी पॉइंट के रिलेटेड, तभी हम किसी बात को कंटिन्यू रख सकते हैं, ओके. क्योंकि हमारे जो कम्युनिकेशन की बात करें, कन्वर्सेशन की बात करें, तो यही तीन चीजें होती हैं. किसी से पूछना, क्वेश्चन, मना करना, रिफ्यूजिंग एंड आंसर देना, दैट इज सिंपल सेंटेंस, ओके. सो वी मस्ट नो ऑल दिस थ्री थिंग्स. हमें आना भी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पुट अप करेंगे इस चीज में, आंसर कैसे होगा, रिप्लाई अगर मना करना है तो नेगेटिव कैसे होगा, अंडरस्टूड. सो दीस थ्री थिंग्स वी मस्ट नो. इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? वी हैव टू पुट इज एंड आर बिफोर सब्जेक्ट, ओके. इज एंड आर को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे. फॉर एग्जांपल व्हाट वाज एग्जांपल कि हम जा रहे हैं, वह जा रहा है, ही इज गोइंग. क्वेश्चन कैसे बनेगा? इज ही, क्या बनेगा? इज ही गोइंग? यस ही इज गोइंग. नहीं जा रहा है, he is not going, understood. so like this we make questioning. after that if we talk about that today we have to discuss about conversation. dear conversation has many things, okay. अब बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कन्वर्सेशन कैसे करते हैं. कन्वर्सेशन इज अ वेरी डीप मीनिंग अबाउट इटसेल्फ. ये खुद में ही एक बहुत बड़ा मीनिंग है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कन्वर्सेशन. हम कैसे स्टार्ट करें कन्वर्सेशन, कैसे स्टार्ट करें, किसी से बातचीत स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट करें, ओके.
Often it is told in the school, but again I am repeating, ये बताया भी जाता है, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर से बता दूं आपको. Whenever we are in school, it is seen, it is observed, it is found, it is checked, it is judged that where we are standing and where we are sitting. हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं. Okay, according to that we have to start the conversation like that. If you are at home, okay, and your friend is coming, so obviously you will go for that. Hello friend, okay, hello Rahul, how are you, and like this you start your conversation. Okay, if you are going somewhere with your papa and your papa is meeting with his friend, and so at that point you will start your conversation by different point of view with different words. Okay, वहाँ आप अपने conversation को बहुत ही अलग तरीके से start करेंगे. कैसे स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी टोल्ड, वो भी बताएंगे. ओके, आफ्टर इट इफ यू से दैट अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, ओके, किसी ने इनवाइट किया है, एट दैट पॉइंट यू विल स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद डिफरेंट वर्ड्स. सो मींस कन्वर्सेशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं. एक्सेप्ट इट इफ यू आर इन क्लास, अगर आप क्लास में हो तो वहां आप कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करोगे. ओके, सिंस बिगनिंग से आपको बताना चाहूंगा. ओके, एज यू गेट अप एंड यू कम टू स्कूल एंड देन यू आर कमिंग टू क्लास, आफ्टर दैट हाउ डू वी हैव टू स्टार्ट. बेटा दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, वेरी कॉमन थिंग, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दीज आर नॉट टॉट. उनको नहीं पढ़ाया जाता है कि कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं. So we must know. I hope that when you come to school after these classes, so you will be having the same experience which I am telling you, that how to start, how to interact with anyone, how to communicate with anyone, and how to start the conversation with the smartness. Okay, क्योंकि एक बातचीत करने का तरीका ही देखा जाता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है. It shows that how much intelligent you are. Okay, so we must know this, that same intelligence. We must show our same intelligence in our conversation also. ओके, लेट्स मूव टू पॉइंट कन्वर्सेशन. अगर हम बात करें कि अगर हम स्कूल के लिए आ रहे हैं, ओके, ओके, एट दैट पॉइंट अगर हम स्कूल के लिए आ रहे हैं और हमें कन्वर्सेशन करना है, सो सिंस बिगनिंग मॉर्निंग में आप घर से निकलते हैं, ओके, एंड यू मीट एनी अंकल, एनी आंटी, एनी फ्रेंड, एनी ग्रैंडपा, एनी ग्रैंडमा टू कम टू योर बस स्टॉप. While coming your bus stop, you meet many people. How would you start your conversation, though that is the time of morning? Okay, so at that, first of all you must know the greeting. Okay, you have to greet your a person who is interacting with you. आपको अपनी communication किससे start करना है, greeting से start करना है. Good morning uncle, okay, good morning auntie, good morning grandpa. Okay, that shows that you are well mannered. Okay, करते हैं, सभी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इफ दे डू नॉट डू, बेटा फॉलो दैट. इट इज अ वेरी गुड थिंग. इट शोज योर मॉरलिटी, हाउ मच यू आर वेल मैनर्ड. ओके, नॉट ओनली योर्स, इट शोज दैट यस यू आर कनेक्टेड विद गुड पेरेंट्स. ओके, तो कहीं ना कहीं ये वो भी संदेश देता है. सो ग्रीटिंग मस्ट बी देयर. आफ्टर दैट यू मे से हाउ आर यू अंकल. ओके, and if they ask you anything, beta where are you going, kahan ja rahe hain aap, okay, school जाएंगे, so don't have to at the time, at the place of being arrogant there, you have to reply in a very calm and in a very sweet manner. Okay, uncle, as you know that I am going to school because it's my moral obligation to have education, okay, and to educate. After that I have to achieve my goal, and like that you can tell more and more. Understood? Except it, इसके बाद अगर आप बताना चाहें, so you can so if you have to finish your communication, then you can say excuse me uncle, now I'm getting late, I'm going to my bus stop, otherwise I'll miss my bus, because that is also very important. Now you come to the bus, okay, and after coming to the bus you meet your friends and the conductor uncle and driver uncle. At that point also greeting matters a lot. Okay, because most of out of 50 students, if you have just only this art of greeting, it shows, it creates a lot of difference. So greeting must be at every place, at home also, not only while coming to school, at home also. घर पे भी greeting एक बहुत अच्छा impact छोड़ता है. So greet everybody, to your parents, to your grandparents, to your uncle, auntie, whosoever is there in your family. Greeting must be there. As you get up in the morning, since morning to evening, and by the sleeping time, you must greet. Okay, सभी को आना चाहिए. Understood?
Now you are coming to school, and so as you enter in school, you greet your parents. Okay, greet your parents and tell them about ask some of the things. How are you, sir? How are you feeling, sir? How is your day, sir? Okay, and have a good day, sir. You may say like this. You can start. Okay, how would you start? For example, I am telling you, sir, good morning, sir. Sir will reply, yes, good morning, beta. Okay, then you will say, how are you, sir? Okay, or if sir is in haste, agar sir is in hurry, sir is going to the you know assembly hall or somewhere else, so you can see the things. You have to see the things. If sir is having little bit time to communicate with you, only in that case you have to start your conversation. Otherwise, do not disturb. And in that case also, excuse me, sir, you will say. Okay, वहाँ भी आप अपने स्मार्टनेस के साथ सर से एक्सक्यूज मी बोल के उनका थोड़ा सा समय इंटरेक्शन अपनी तरफ लेंगे. एक्सक्यूज मी सर, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू फीलिंग सर टुडे, एंड लाइक दिस you can start your conversation. After that, if you talk about that, you go to your class and your friends, they are sitting, they are waiting for the assembly bell. Okay, and you are also sitting at the, you also entering the same room. So at that point you can start, hello friends, how are you all, and like this, have a sweet good morning, have a sweet morning, have a beautiful morning, like this you can start your interaction. That is only up to greeting. ये कहाँ तक है, ये greeting तक है. अब conversation पे क्या डिपेंड करता है? Okay, up to school level. Okay, you can greet your teachers, parents with standing in proper manner. आप उनको ऐसा खड़े होके आराम से greet कर सकते हो. But if you have to greet your friends, in that case you can shake your hand. Hello friends. Okay, hello bro. Understood? Like this you can greet. Okay. Starting conversation depends that if you are under pressure, you won't be able to make your eye contact with anyone. Okay, so conversation में best एक better point होता है making eye contact, और एक big point भी होता है. Okay, if you are not able to make eye contact, it means you are not confident. इसका मतलब क्या है कि आप confident नहीं है. Understood? तो confidence किससे show होता है? If you make eye contact with the person who is standing before, जो आपके सामने खड़ा है, उससे अगर आप आई कांटेक्ट बना पाते हैं, in that case shows your confidence. Okay, and start your conversation in that manner, like that. Yes, you are well prepared about your conversation. Okay, आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं making eye contact with a greeting, but basic thing is start every time the conversation with the greeting. Okay, and after that you can start like that. Greet, you are done, and make eye contact. Hello friends, everyone. Hello everyone. Hello my all the teachers. A very good morning. And this. My name is Rohit. I am from. I read in that standard. I am from 9th standard. Today I am here to represent that point. Okay, like this you can. I am from 6th class. My name is this. Okay, today I am here. I am here to discuss about a point like this. You can start your conversation. Okay, it has many ways, but the basic thing is this. Beta, your body language must be like that. You are confident. Okay, making eye contact, it must be there, and greeting, it must be at every place and with everyone. You don't have to hesitate in the matter of greeting. Okay, after that you have started, and as you finish your point, because ending of your speech, because you have delivered completely and now you are going to finish it, that also matters a lot. How you finish your speech, how you go for its end, इसका finish कैसे करते हैं आप, इसको यानी कि ending कैसे करते हैं. So if you are going to finish your speech, in that case you have to have again their attraction. एक बार फिर से उनका attraction लेना है. So now I am going to finish my speech. That's all from my side. Have a good day, and like this you can finish. Okay, so now it's our time also to finish this lecture. I hope that you understood. This is a basic conversation how do we have to start, because we were letting you know, हम आपको बता रहे थे बेटा future action, existence, this that, but somewhere some of the students are not aware about these points. उनको ये नहीं पता कि conversation कैसे start करना है.
greet कैसे करना, they just go pass from the teacher, okay, pass from the lobby and teacher is standing, they do not know the greeting and these things. So beta these plays a very important role in student life. So please follow these the gestures this which I have told you and be connected with these classes. Once again, welcome to the live class Suraj School Balana, and it's enough for today. That's all. Have a good day. Bye bye. Thank you.